हार्ट फ्रेंडली एक बहुत बड़ा धोखा है। जो भी ये लेबल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हार्ट फ्रेंडली लोगो, जिस तेल पे हार्ट फ्रेंडली लोगो लगा है ना, वो तो बिल्कुल नहीं खाना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जहाँ लगा है ना भाइयों, उससे दूर रहना। अमेरिका वाले ही सबसे ज़्यादा, आई मीन दे आर द पीपल हु आर फकिंग सफरिंग फ्रॉम द मोस्ट ऑफ दीज डिसीजेस, राइट? सो एनीथिंग विच सेज अमेरिकन हार्ट फेडरेशन, स्टे अवे फ्रॉम इट, और एनीथिंग अमेरिकन, राइट? Hey guys, good morning. So it's a beautiful Sunday out here, and it's a sunny Sunday. The peaks are snowed out. The sun is out and bright. The sky is blue. Some drama in the sky. Some clouds. So I thought I'll take some time out, not going to the gym anyhow because it's a Sunday, and talk about fat. Right? Fat, as in the fat that we eat, how we eat, what we understand with it, how we understand, how we look at it. How our opinions have been shaped about it, things like that. So let's see how much I can get in one video. All right. We'll try not to make it long. Maybe break it into sections. So here I'll start with first of all. So what do we understand by fat, right? So when we talk about fat, when we look it up, or when we talk to anyone, everyone has their own opinion. The most popular and most seemingly educated opinion being that monosaturated, unsaturated, and hydrogenated. I mean, all those, I don't know what kind of generations we are talking about here. But yeah, you understand what I'm saying, right? Polyunsaturated, monounsaturated, hydrogenated. I mean, let's not get into that. I mean, that's not how I understand them. And I don't think any sensible average person would be able to make any sense out of these things, because it gets too complex, right? So for ease of understanding and for practical purpose, practical execution, and my experience in food business, my experience in studying nutrition for myself, I have broken it down into like 2-3 broad ways that I decide what is a good fat and what is a bad fat, right? One way to look at it is if it's natural, if it's coming from your, when I say natural, if the fat is part of the food, right? Unprocessed. When I say unprocessed fat, like if you eat badam, if you eat almonds, right? There is natural fat in it. If you eat anda, there is natural fat in it. If you eat cow milk, there is natural fat in it. If you drink cow milk, actually, right? If you have avocados, there is natural fat in it, right? If you eat soya bean, I'm not talking about the nutri and the chunks that we get. I'm talking about the actual dal, the actual lentil, the actual legume. There is fat in it, right? So this is natural fat, right? Which is completely unprocessed, which occurs in the food, right? So this is good for us, right? We need not worry much about it, right? What is it? Fish, right? Meats, right? Of course, don't go overboard with any source. I mean, don't fucking end up eating meat all the time, right? Eat the soybean as well, eat the avocado as well, eat the badam as well, right? You have to eat everything. Drink some milk as well, right? Combine all types of fat in your diet, right? So these are the natural dietary sources of fat, like seeds of all kinds, nuts of all kinds. These are the vegan sources. Dals and legumes have fats in them, right? And then non-vegan sources, of course, are meats, all kinds. In meats, we have pork, we have mutton, we have lamb, we have chicken, we have fish as well. We have prawn. I mean, everything, right? Everything that you eat, which has fat in it, which is naturally occurring fat, right? So that is one criteria. All right. Dairy, mein paneer, cheese, doodh. So these are the things, right? And then something we will call a processed fat, right? Processed fat is fat which has been extracted from the source, right? तो प्रोसेस फैट्स के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है? अब प्रोसेस फैट्स के अंदर भी 2 तरीके के हो जाएंगे, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। प्रोसेस फैट्स में हो गए, अब आपने मस्टर्ड लिया, मस्टर्ड का तेल निकाल लिया. You took peanuts and you took peanut oil out of it, right? You took soybeans and you took soybean oil out of it. You took milk and you took ghee out of it. You made butter out of it, right? You take almonds and you make oil out of it, right? You take flax and make flaxseed oil probably out of it, right? So all these oils, they are naturally occurring oils, right? ये मतलब नेचुरली अकरिंग है और
ट्रेडिशनली हम खाते आए हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, you know, which we have been brought up. Like if you talk about north, it's mustard. If you talk about south, it's coconut. Some groundnut, peanut somewhere in the middle. I mean, this is how we have been dominated, and ghee is common all over India, right? So these are our traditional natural occurring fats, right? अब हम आ जाते हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमें खिलाया जा रहा है, ठीक है ना? तो वो है जो आपकी डरावनी चीज़ है, जिसके अंदर आप जो भी कमर्शियल खाना खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ जो आप मतलब अब कैसे ये जो रिफाइंड ऑयल है ना बाबा, मतलब दैट आई फील इज़ द किलर, राइट? सो दिस इज़ नॉट, आई मीन इफ़ यू गो इन द मार्केट एंड बाय वेजिटेबल ऑयल, राइट, यू वुड नॉट इवन नो व्हाट वेजिटेबल्स आर इन देयर, ठीक है ना? सस्ते, प्रोसेस्ड, रिफाइंड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वट एवर सोर्स ऑयल्स, यू नो, कुछ लोग तो कॉटन सीड ऑयल को रिफाइन करके उसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, और लीगली दे कैन डू दैट, राइट? लीगली देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल्स विच यू वुड नॉट ईट, राइट? बट वो वेजिटेबल की कैटेगरी में या वेजिटेशन की कैटेगरी में आते हैं, तो लॉ में उसको वेजिटेबल ऑयल गिना जाता है, बट दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये वाले फैट्स जो हैं, ये हमें थोड़े ध्यान से खाने चाहिए कि भाई आप जो करी बना रहे हो या घर में जो भी वेजिटेबल्स खा रहे हो, और वट इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट और वट एवर, यू नो, सो जब भी हम बात करते हैं कि फ़ैट के मैक्रोज बढ़ाओ या फ़ैट खाओ, तो पहला इसके अंदर जो लेवल होता है वो तो नेचुरली अकरिंग अनप्रोसेस्ड, ठीक है ना? पूरा अंडा खाना है योग के साथ, होल डेयरी दूध पीना है, होल फैट वाला, ठीक है ना? चीज़ खाना है, मीट्स खाने हैं, ठीक है ना? सीड्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, अनप्रोसेस्ड, ओके? सो उससे जो फैट के हमें कैलोरीज मिल रही हैं वो मैक्रोज में हम काउंट करते हैं। उसके अलावा जो अगर हमें एडिशनल किसी चीज़ को फ्राई करना है, रोस्ट करना है या तड़का लगाना है, डाल के खाना है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है जो भी आपके नेचुरली अकरिंग बोलूँगा, या फिर जो जिस भी चीज़ को आप खा सकते हो उससे निकला हुआ जो तेल है, ठीक है ना? मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी, बादाम का तेल, ठीक है ना? ये सारे तेल हमारे लिए अच्छे हैं। तो ऑफ द शेल्फ जो आप बाज़ार में ख़रीदते हैं तेल, उसको देख के ख़रीदें, क्या ख़रीद रहे हैं क्या नहीं ख़रीद रहे। हार्ट फ्रेंडली एक बहुत बड़ा धोखा है। जो भी ये लेबल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हार्ट फ्रेंडली लोगो, जिस तेल पे हार्ट फ्रेंडली लोगो लगा है ना, वो तो बिल्कुल नहीं खाना है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जहाँ लगा है ना भाइयों, उससे दूर रहना। अमेरिका वाले ही सबसे ज़्यादा, आई मीन दे आर द पीपल हु आर फकिंग सफरिंग फ्रॉम द मोस्ट ऑफ दीज डिसीजेस, राइट? सो एनीथिंग विच सेज अमेरिकन हार्ट फेडरेशन, स्टे अवे फ्रॉम इट, और एनीथिंग अमेरिकन, राइट? सो इट्स फुली कमर्शियल, राइट? सो एवरीथिंग हैज़ बीन optimized, or you know, everything is motivated by capitalist interest, so you can understand that, right? तो आप अनप्रोसेस खाएं। तेल अपने यहाँ जो लोकल आपके एरिया में है, अगर साउथ में है तो कोकोनट ऑयल, नॉर्थ में मस्टर्ड ऑयल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन चीज़ों को यूज़ करें। नंबर 1 जो नेचुरल फूड में होते हैं, अंडा, मीट, पनीर, दूध, दही, ठीक है ना? नंबर 2 जो नेचुरली जो चीज़ों को खा सकते हो आप, उनका तेल, ठीक है? तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक शुड सफाइस इन दिस वीडियो, ठीक है? इसके अलावा फिर कोई और ऐड ऑन होगा या कोई और चीज़ करनी होगी, कोई सवाल होंगे, तो आई विल रिकॉर्ड अनदर वीडियो। ऑलराइट गाइस, एंड सांस फूल गई मेरी बोल के। आई नीड मोर स्टैमिना गाइस।